1st July 2015, a revolutionary day, Digital India, a new initiative, a new era. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भारत अगर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में विश्व को मानव के इनर सॉफ्टवेयर को मजबूत करने का संदेश दे सकता है, तो खुद सॉफ्टवेयर पावर बनकर डिजिटल इंडिया के विजन को साकार भी कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के तेजस्वी नेतृत्व में यही है शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत, समृद्ध भारत, संस्कारित भारत, संगठित भारत और अब डिजिटली संगठित भारत। Honorable Minister of Communications and Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad, is passionately committed to fulfill the vision of Digital India set by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He believes that Digital India can bridge the gap between the digital haves and have-nots. हम माननीय श्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, इस हॉल में उपस्थित पूर्व उप प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आईटी के सम्मानीय सदस्य आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री परिषद के सम्मानीय सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री थावरचंद गहलोत, श्री जुएल ओराम, श्रीमती निर्मला सीतारामन, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण and the proud representative of the corporate sector, both India and global. A warm welcome to all of you and greetings and namaskar. मित्रों, डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया का सार है एक डिजिटली साक्षर भारत, एक समर्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक सुशासित भारत, जिसकी बुनियाद पर बनेगा एक शक्तिशाली, विकसित और दुनिया में प्रतिष्ठित भारत। यह है कल्पना डिजिटल इंडिया की। I am indeed grateful that Honorable the Prime Minister, after his historic victory, within 100 days conceived this inspirational program designed to completely transform governance by harnessing the potential of information technology. With the participation of the government, the people, and the private sector. It has touched the chord of India and the world. In the last 1 year, Department of Telecom, IT, Postal, and other departments have done quite well. In India, we have got 1 billion plus phone connectivity. The mobile itself has reached about 975 million. We have got internet penetration of 300 million. But the story of Digital India is not about numbers of laptop and phones. It is an idea where we conceive of not only an IT-enabled services, but IT-enabled society. 1 billion people of India, powered by information technology, seeking to transform their creativity, passion, and capability. प्रधानमंत्री के उस बहुत ही प्रेरक शब्दों में IT plus IT is equal to IT. India's talent plus information technology is equal to India tomorrow. Digital India is designed to bridge the digital divide. It is more for the underprivileged, for the poor, erecting infrastructure for utility, digital delivery of services for good governance and removing corruption, and above all, empowering. We are laying optical fiber network connecting 250,000 gram panchayats. Digital India is politics neutral, is party neutral, is ideology neutral. And I'm very happy, under the inspiration of the Prime Minister, all the state governments today, major, have come together to make BharatNet a great success.
My IT department has come with many extraordinary products: Pro People, convenient, e-education, e-health, e-scholarship, e-entertainment, e-commerce. It is going to be launched today. We talk of digital inclusion. We have come with a BPO policy, 48,000 seats divided all over the country, hand-holding by good companies with the local entrepreneurs. What is our idea? The idea is to have BPOs from Kashi to Gorakhpur, Muzaffarpur to Bhagalpur, Sambalpur to Jabalpur, Jodhpur to Bharatpur. That is the idea of digital inclusion for which we are coming with this program. हमारे पोस्टल विभाग को भी बड़ा काम करना है इस बदलाव में। 1,50,000 जो हमारे पोस्टल के देश भर में पोस्ट ऑफिसेज हैं, आने वाले 18 महीनों में हम सारे ग्रामीण पोस्ट ऑफिस को हैंडहेल्ड डिवाइस देने वाले हैं जो सोलर पावर होगा और वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में सक्रिय होंगे। और आने वाले 2 वर्षों में हम देश के अधिकांश ग्रामीण पोस्ट ऑफिस को मल्टी सर्विस सेंटर में बदलने वाले हैं। सब मिलकर काम करेंगे तो देश डिजिटल इंडिया के आगे से साथ आगे बढ़ेगा। एंड ऑनरेबल द प्राइम मिनिस्टर, digital India will remain incomplete without Make in India. And I would like to appeal to all the giants of Indian industry and the global representatives here that electronic manufacturing is waiting to be exploited. It is a great area of growth. All the state governments have come on board. Please come, invest, create jobs, earn profit, make in India for India, and also export outside. That is the essence of electronic manufacturing, which we are promoting in a very big way. ये डिजिटल इंडिया भारत को बदलने वाला है। इससे भारत की तस्वीर बदलेगी। हमें मिलकर काम करना है। आज हम ये संकल्प करें कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को बदलने का जो महाअभियान चला है, जिसे सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, गांव के लोगों की आवाज मजबूत होगी, विकास होगा, नियोजन होगा, ये है पूरा डिजिटल इंडिया का भाव। With that pious hope, let me appeal to all the people present here in thousands. Let's take a collective vow to make this great mission a great success along with all the states and the people of India. Thanks a lot. Today I must congratulate, lastly, and welcome the great IT professionals of India, many of whom are present here, who have done great wonders. Today I also salute a large number of social media activists, many of whom are present here, who have given a new power to social media and India. My greetings to all of you. Abhinandan, Swagatam, Namaskar, Dhanyavad, Jai Hind.